80s and 90s, kids grew up witnessing stardom of a different kind, thanks to Bollywood masala pot boilers. But aaj, stars are no longer just limited to the big screen. How actors are dealing with the stardom of a different kind with the advent of social media and the OTT world. Well, that is something that we must discuss. Let's welcome the super talented actor for our next panel discussion, Nushrratt Bharuccha. And one more very, very special one. He's an actor, he's a casting director. We love him because he's just amazing. Please put your hands together for Abhishek Banerjee. And that is going to be our next panel discussion. TVS Jupiter presents New Age Bollywood Stars in a fast-changing world. And ladies and gentlemen, please also welcome your moderator for today, me. Woo. Well, hi guys, yeah, I didn't know there was going to be a full audience. I thought it was going to be like a conference. Quite a room young of- audience. तो एक मिनट आपको क्या लगा हम क्यों मिल रहे हैं लूडो खेलने लूडो भी खेल सकते हो, उसमें भी ज्ञान दे सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम. कॉलेज बंक करके आए हो क्या? I Oh can my see it in God. their faces. इसलिए यहाँ अभी अटेंडेंस बड़े फुल खुश है. हैं ये लोग. I think this is a great start. बचपन सही में आप लोग कॉलेज बंक वगैरह करते थे? हाँ जी, प्लीज रोज. हम तो जवानी में भी करते थे कॉलेज बंक. नहीं लेकिन did you all bunk your college and attend ऐसे some very intellectual panel discussions? क्या नहीं नहीं नहीं. I think I was smarter than you all. Sorry, if I bunked, I bunked. I went. I didn't enter any other attendance place. I used to bunk and go to the malls, you know, mall में जाके. दिल्ली में यार मॉल का बड़ा कल्चर था ना वो. इसी की हवा. हाँ? इसी की हवा. एसी की हवा, विंडो शॉपिंग, बस यही सब करते थे हम लोग. पैसे तो होते नहीं थे. ठीक है तो मतलब अगर आपको अभिषेक बैनर्जी बनना है तो you know what you have to do now. Yeah. मॉल्स में जाइए ऐसे ही घूमिए. और मैं शॉप लिफ्टिंग भी करता था. This is changing it to a whole different topic. सारी चीजें एडमिट नहीं करते ब्रो. क्यों नहीं करते यार? I mean, why not? They'll start shoplifting. I mean, it's a talent यार. I mean, if you can do it, it's your talent. आपके ऊपर है यार. So opportunities से याद आता है मेरा पहला सवाल कि आप शॉपलिफ्टिंग करते थे. Opportunity. जो हमें बड़े कम मिलते हैं. आगे बोलिए. क्या आपको लगता है that since the time of the OTT era, opportunities as actors for you all have increased? You have to do that because नुशरत, उन्होंने साथ ही बोला. मैं ये सवाल आपकी आंखों में देखकर पूछना चाहूंगी आपसे. नहीं पता है when सोनू की टीटू की स्वीटी released and it became what it became, that was the first year OTT awards had happened and we had got the buzz creator of the year with our content, like so whatever, like our promotional campaign, and I'd gone on stage and somebody had asked me the question then, and this I'm talking about 2018, which is even before pandemic and before OTT boom. And on stage then I said this is going to be the next big thing for all actors, writers, directors who can't do what they want to do in a film, because of course we have certain restrictions and censorships, but the creativity, the option of doing 8 hours of content in a series, 8 hours of living a character instead of 2 hours in a film is amazing, is I think a great space. And मैंने तो उसी दिन बोल दिया था, मैंने कहा this is it guys, this is a great space for us to be in. Abhishek, do you have anything to add? Yeah, of course. I think for me, OTT definitely, I think, changed my life in many ways. I started off as an actor in films, and then I was little scared about my, the kind of roles I was getting, because I was getting stereotyped into a quirky young boy from UP. You know, everybody was offering My film only, with me only. मतलब वही लाल शर्ट पहन के आ जाओ, चमकीले शर्ट पहन के आ जाओ, कुछ कोक कर दो, रंगीन sunglasses. You know, every character was like offer, whatever was offered to me after Stree or Bala or Dream Girl were very similar, and I was getting scared because I was like, oh damn, like I will never be cast as a drama actor, and I love drama. I love the intensity in that, and thankfully Patal Lok happened. And that changed a lot of things, because that at least gave the directors a new, they saw a new me, and because of that I got different kind of offers, even in films like Rashmi Rocket happened, where I played a lawyer. So I think OTT is a great space where actors can explore, experiment and evolve.
So I think that way OTT has done a great job for many of the actors and इतने सारे actors जो भी यहाँ पर हैं शायद बहुत मुश्किल होता अगर अगर OTT नहीं होता उनकी ज़िंदगी में. एक ज़माना था जहाँ पर स्टार्स बॉलीवुड की वजह से बनते थे, फिल्में कर रहे हैं, बड़े पर्दे पर नज़र आ रहे हैं. कैन यू ऑल शेयर विद अस लाइक इन शॉर्ट कि आपके लिए क्या चैलेंजेस थे बिफोर द OTT एरा टू जस्ट गेट वन रोल और टू जस्ट गेट अ गुड स्क्रिप्ट? क्या जद्दोजहद करनी पड़ती थी नुशरत? मतलब मैंने तो खैर फिल्म से ही स्टार्ट किया था. OTT पे तो मैं बहुत बाद में आई थी. LSD. LSD. What a great performance. I was a fan of Nushrratt and I saw that. Thank you. I told you that. तो स्ट्रगल उस वक्त बहुत ही अलग था बिकॉज देर वॉज अ सर्टन मोल्ड दैट यू हैड टू फिट इन टू बी अ एक्ट्रेस और अ लीड एक्ट्रेस. एंड ये मैं तब भी कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ, शायद आज ज़्यादा सेंस बनाएगा, बट जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती ना तब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं खुलते. देन it's only after you reach a certain like stage or in your filmography are you going to have the privilege to choose what you're going to do next and not do next, and that's a privilege because जब काम नहीं होता ना फिर आपको जो भी मिलता है आप कर लेते हो, बट जब आप थोड़ा स्टेबल हो जाते हो then you're able to pick. For me, because my films did well, I was able to pick what I could do next, and I'm very very thankful to the films and the success I got, even if I didn't agree with the films or even if those were not my taste of films. Like Abhi said, I started with LSD, and I remember after LSD I was wanting to do only those kind of films because it gave me so much joy being a part of a subject and a film that said so much more and meant so much more. But success मुझे प्यार का पंचनामा से मिली, which I don't know said what and gave what, but it became insanely popular. But it's because of that I was able to do, say, Ajeeb Dastan or Chori or Janhit or Keli or whatever. So my struggle has been different, but it's still a struggle nonetheless. So basically theater got you the stardom, right? Correct. Yeah. It still gave me back the rewards for the struggle that I went through. Most people don't get that. And so for me, I'm very thankful to everything that happened, the good and the bad, in equal measures. बट एज एक्टर्स डू यू ऑल स्टिल फील दैट OTT तो करेंगे ही लेकिन एक बिग स्क्रीन फिल्म डेफिनेटली ऐड होनी चाहिए, बैलेंस इंपॉर्टेंट है? इज दैट अ कॉन्शियस थिंग? बिकॉज वी हैव ऑलवेज ग्रोन अप टू यू नो व्हेन वी स्पीक अबाउट एक्टर्स हु वांट टू मेक इट बिग, दे वांट टू सी देमसेल्व्स ऑन दैट बिग स्क्रीन. तो क्या ये अभी भी थॉट आपके लिए रहता है कि मैं अगर OTT भी बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं बड़े पर्दे पर फिर भी? नहीं, मैं तो बॉम्बे आया ही था बड़े पर्दे में काम करने. So yeah, I mean that goes without saying that I always want to do theatricals. Like how Nushrratt just said that, I think the stardom, that adjective is, I think you get it only in theaters. Because the audience is watching you together. तो जब तालियों की आवाज़ जो आपको मतलब सुनाई में देने को मिलता है, जब ये सीटियाँ बजाते हैं, like right now when they're clapping, then you feel important. Otherwise you would not know. Instagram पे चाहे कितने भी messages. Damn good example. Duck, you said duck. I said shucks. Damn good example. Because he's right. It's because we have an audience here live sitting and Yeah. clapping for us. We Yeah. felt that. Yeah. अभी अगर ये सिर्फ हम 3 जन होते और कैमरा होते और खाली रूम होता तो और zoom होता हाँ तो कुछ समझ ही नहीं आता समझ ना ही कि हम नहीं आता। कहाँ हैं क्या नहीं है. और ये क्या है कि सोशल मीडिया के टाइम पे इट्स वेरी इजी टू फील दैट काइंड ऑफ एडजेक्टिव एज यू सेड, एंड आई ऑलवेज टेल एक्टर्स दैट फर्स्ट ट्राई टू बी अ गुड एक्टर. स्टारडम जो है ना वो ये लोग संभाल लेंगे. अगर मतलब इफ दे रियली लाइक यू, दे विल मेक यू अ स्टार. आई डोंट थिंक वी शुड थिंक अबाउट दैट. And for actors, just as an actor, I feel that you should not be thinking whether you're performing to be a star. Yeah. You should just perform and then let it flow. Like if you're really good at it, if you're really if you're connecting with the audience, if you can communicate with the audience through your performances, if you have some kind of empathy levels, if you have love, if you have generosity, all of that, I think, and that really matters a lot as a performer, I feel. And then the audience will give it back to you. So not to take yourself very seriously, whether you're on OTT or on theatrical. So now the big question that we are here to discuss for this panel especially is that ki in a day and age where there have been such wonderful content all over OTT, बहुत सारे
OTT stars बन रहे हैं, and the definition धीरे धीरे has been changing in the mindset of people. Can you guys tell us that what according to you defines a star first? I have actually of lately started believing and feeling that जैसे आप कह रहे हो ना अभी के जो stars है new age stars और our new generation of stars, stardom is very volatile right now. For me, I think the content is the star. एक फ्राइडे आप कितने भी बड़े स्टार हो, OTT के हो, फिल्म्स के हो, कहीं से भी हो, अगर एक फ्राइडे आपका कंटेंट लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो वो आपका स्टारडम इनविजिबल हो जाता है. और जिस फ्राइडे सपोर्ट किया या OTT पे जब भी आती है, व्हाट आई मीन इज व्हेनेवर इट रिलीजेस, वेरेवर इट रिलीजेस, उस दिन इफ इट डज वेल तो आप स्टार, नहीं तो यू आर नॉट. तो इट्स बिकम वेरी वॉलेटाइल. इट्स नॉट व्हाट इट वाज बिफोर कि आप जनरेशन से सालों से स्टार ही हो, वो नहीं है. आई थिंक इट्स बिकम वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड it's become difficult to actually decide the magnitude of your stardom based on the social media life we are living today. I think what's happening now these days that OTT stars especially, it's coming from your characters. So Content is yeah, when the characters are becoming hit na, and when they are becoming catchy, when public are like audience is talking about the characters and they're saying those lines, वैसे मुझे लगता है कि पहले भी वैसा था. Like for me, Samba is also a star. Yeah, even Reo Samba, सबको from company, I remember people used to call Chandu या character के नाम से Bhiku Matre, Matre. all of that. And Bhiku Matre तो मतलब main role था भी नहीं सत्या में, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है भिकू मात्रे को स्टार बनाया है. So I feel characters they define your stardom. Like even for मतलब छोटी मुंह बड़ी बात, but खान साहब के लिए भी राज, वो जो नाम था राज, शाहरुख खान साहब का, everybody was talking about that. And for Mr. Bachchan it was becoming Vijay. तो ये जो नाम थे ना सलमान खान के लिए प्रेम, तो वो जो नाम हमेशा से ना मुझे लगता है कि वो किसी भी एक्टर को स्टारडम तक लेके जाता है. जब तक कि ऑडियंस आपके कैरेक्टर नेम को नहीं पहचानती है तब तक मुझे लगता है कि आप स्टार नहीं हो in a way, because you might be visible, you might be known to people, but till the time they're not calling you with that character name, I don't think you have gained that kind of love for your acting. That's what I really feel, and it can come with any of the characters. आपको पता नहीं कब, जैसे इनको सोनू की टीटू में मिला है ना, तो उनको तो बाबू पता नहीं कब से चिपका हुआ था. exactly. तो वही है. तो मतलब वो जब वो एक एडजेक्टिव वहाँ चिपकता है तो मुझे लगता है कि आपके नॉर्मल जिंदगी में. और इंडिया वैसे भी इतना बड़ा देश है, हम लोग कभी कभार कंफ्यूज कर जाते हैं स्टारडम को अपने एरिया के स्टारडम से. समटाइम्स व्हेन यू जस्ट स्टार्टिंग ऑफ यू आर अ स्टार इन अंधेरी. आप मतलब अंधेरी जूहू में आप बहुत बड़े स्टार बन गए हो, जैसे ही दिल्ली पहुंचे कोई नहीं जानता है. बॉम्बे दिल्ली में स्टार बन गए और लखनऊ पहुंचे कोई नहीं जानता है ना, और बरेली चले गए, बिहार चले गए. सो आई थिंक इट्स सच अ ह्यूज कंट्री, इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं. स्टारडम का मापदंड जो है ना वो बदलता रहता है. सो आई थिंक ज़्यादा सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए. वी शुड सी एंड एक्चुअली जाओ जाके देखो, मतलब कहाँ कौन से प्रदेश में कितने लोग जो हैं एक्चुअली आपको काम जानते हैं. यू विल गेट टू नो व्हेन यू एक्चुअली गेट ऑफ फ्रॉम योर कार्स ऑन द रोड. Since you mentioned this, कई बार OTT की खास बात ये होती है that it's got a reach 190 countries में देखा जाता है वगैरह. तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि apart from India, कौन से अलग अलग देशों से आपको आपके फैंस पहचानते हैं and have watched your content that you all remember now of? I was in फिरंगी लोग. हाँ, मतलब ये सच्ची में 190 कंट्रीज में लोग देख रहे हैं, और you have actually seen people messaging you from different places. I was in Istanbul airport taking a connecting flight, and I've had 2-3 ladies come up and tell me that they've seen Janhit में जा रही. Wow. And I said, say that again. मतलब एक मिनट कहाँ? And then I realized, on like Z5. I said, oh, okay, that's interesting, because I'm still thinking they've probably seen Sonu Ki Tutu Ki Sweetie or something. You're correlating to that success of yours. But the reach is crazy, and I think that's the biggest advantage tool. एक होता ना when we say we need something to cut through the clutter. I think that's what OTT has. The reach that it has cuts through all the clutter.
Do you all also feel that, you know, now there's a complete definition of ye OTT star hai? And also the best part is that probably age is no bar. Like we see actors of every possible age, and jaise aapne kaha that content is the real star. Characters make them, you know, just special. I think Pankaj Tripathi is one of the best examples we can give. Like, you know, he's been doing films for so many years. But Kaleen Bhaiya, yeah, give it up for Pankaj Tripathi. Kaleen Bhaiya is now a household name. So, what do you have to say about that, Abhishek? क्या ये OTT star का जो differentiation है कि अच्छा इनको OTT पे देखा है इसलिए ये OTT star है ये does this also take an actor forward? Does this also add to their stardom? आई थिंक पंकज भाई इतने अच्छे कमाल के एक्टर हैं कि वो मतलब कहीं पर भी होते वो हमेशा आई थिंक ही वुड हैव यू नो वो स्टार बनते ऑफ कोर्स वही है कालीन भैया वो कैरेक्टर इतना बड़ा बन गया दैट पीपल वुड ऑलवेज एसोसिएट हिज स्टारडम विद दैट बट ही वाज रुद्रा भैया एंड स्त्री बिफोर कालीन भैया या एग्जैक्टली और उनको स्त्रीकली मिला बरेली की बर्फी में he was like you know he was too good so he's been doing it since many years here only thing is वो character suddenly it became bigger than probably his real life persona and that's why people will associate that but यार मतलब वही है कि OTT star या film star या TV star ये तो अलग अलग mediums हैं and I think right now for us it's like how probably a life of a cricketer would be that you have to succeed in one day T20 and test match you know you can't just call yourself a T20 star or a test match star or a you know a one day star you have to like play in different mediums these days there's a additional pressure for actors to be an Instagram star है ना Do you guys feel the pressure? Nushrratt has already rolled her eyes. I really don't I मुझे नहीं चाहिए कितने फॉलोअर्स है आपके इंस्टाग्राम पे अरे वैसे? छोड़ो ना यार ये बता दो followers का क्या ये फिर नहीं, हमारी कास्टिंग भी करेंगे नहीं मैं बता रही हूँ Casting आई भी वांट टू होगी से यार दिस एन एग्जांपल इफ यू सी हिज फॉलोअर्स टेल मी हाउ डज दैट कोरिलेट टू द फैक्ट दैट दिस मैन इज द बिजीएस्ट एक्टर राइट नाउ इट डजंट कोरिलेट टू मी फिर तो उसके फॉलोअर्स मिलियंस में होने चाहिए राइट I don't make content for that particular Exactly. medium. That's why I feel that every medium has a different ball game. If I'm catering to that, and I don't want to work for free for a social media platform, you know, because I'm an actor, I need to be paid if I'm acting. So that's the reason why I don't do many of the stuff which we are supposed to do to gain followers and gain momentum and all of that. उस हिसाब से तो मतलब you know that's as you said I think Shahrukh Khan doesn't post every day but क्या उनसे बड़ा कोई स्टार है Ranbir Kapoor India is not even on Instagram. yeah Can I just point that out? Exactly. He's not even on Insta. exactly and I mean even in Hollywood I think DiCaprio doesn't use social media for his you know क्या कहते हैं look post and all of that he's doing it for something else you know and तो मतलब ये जो social media stardom versus real stardom में थोड़ा सा confusion है it's an illusion you can be in Dululu Completely. It's a complete illusion. You know, I feel like even a Ronaldo has 640 million followers, right? You know what I'm saying? But he's a sports star. There's a difference. A Taylor Swift has, I don't know, 200 plus million followers. Ariana Grande has 300 plus million followers. They are pop stars. A Shraddha Kapoor has 93.4 million followers, but she's Shraddha Kapoor because she's been in films that have done blockbuster numbers. She's brought that business to theaters. So I feel like हम ना वो differentiation भूल गए हम completely. जो if we don't keep it, then how are we going to function? हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. I want to ask this question to you, Nushrratt. There are a lot of social media creators, influencers who enter films or OTT platform. As an actor, does that go down well for you? Because you know शायद कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी कुछ creators होंगे जिनका कोई ऐसा थिएटर एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं हो लेकिन वो probably उस प्लेटफॉर्म पर अपना स्टारडम लेकर आएंगे ये सोच से उन्हें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. If that person is a damn good actor, if that person does a damn good job in the role that they are cast in, I'm very happy to support them. Even if they don't have any acting background, because I don't. I haven't gone to any acting school ever. He knows that. Ever. I've only learned acting in his auditions, like all my life. So I'm happy to support them if they're really good actors. But if they're not actors, and if they can't justify what they've been given,
then I want to question why they've been given that. Because they can have millions of followers, but those millions of followers are not buying tickets to come to a theater to watch them. So then don't eat up another actor's space who can do a much better job than you. And I don't even blame, see, सबको try करना चाहिए यार, सबका हक है, please audition करो, सब try करो. I feel the onus lies on the casting directors, the producers and the directors. And I think that's a very relevant conversation. OTT channels. Correct. It's a very relevant conversation today because I am hearing this. I am hearing pressure being put on people to cast based on their followers, which I don't think should ever be a headspace only. Let the creator decide. If the director feels, yeah, I like this person's personality, she's not an actor, he's not an actor, but I like this quirkiness that they have and I want to use this in this particular character, great, please cast them. But if they're not good actors, then I don't see how that converts. I'd like to ask this question to you as a casting director, Abhishek. Is that something that you've been ever briefed कि इनका social media handle check करके followers कितने check करो और फिर इनको audition पे बुलाओ, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, I think it's a new trend these days. Evil. Yeah, it's a new It's evil. a new evil. And I think, see, what's going to happen is that if people start casting like that, then the performer doesn't act well. The show is going to fall flat. Nobody's going to remember that show within a month or 3 months. मतलब हमें पता है कि कौन-कौन से shows लोग देखते हैं. I was just talking about a show called Tabbar. It is on Sony Live. I think it's a wonderful, wonderful show. It has nobody, you would think of as so-called stars or something like that. But वो show लोगों ने देखा है और वो show बहुत ज़्यादा popular हुआ है. A show like Kohra, a lovely show, and a show like Jamtara. अब जमतारा में कौन है, कौन लोग थे, कितने फॉलोअर्स थे, किसी ने पूछा ही नहीं. आप लोगों को शो पसंद आया, आपने वो शो देखा, उसका सेकंड सीजन आ गया. So I think that's how, for me, OTT is that you don't really know to know about the actors. You just want to watch a story, and if the story clicks with you, you like that, and there's the second season. And then of course there are times when people are just casting on the basis of followers, this, that. But वो shows को कोई याद नहीं रखता. I don't think so. I don't think that there are any memorable show made with bad actors. But are there people who send you their social media handle instead of their profile to call for acting? Or their audition tape. I like that question, bro. कि ये मेरा इंस्टा हैंडल है, देख लो भाई इतने फॉलोवर्स हैं, हाँ. कि क्या प्रोफाइल देखना. हाँ, of course होता है, वो तो मतलब लोग करते ही हैं. And then वो इंस्टा पे वो DMs भी आते हैं ना, वो people who are like more popular, so that I know that how many followers they have. I think that's the reason they would do that. But I mean, as I've always said that no matter if you are really like, you have to go through an audition, and if your audition is not good, then 9 out of 10 times you will not be selected, at least through my company. But it's sad because sometimes I've heard directors being really irritated with this, and they're very frustrated because अगर आप director से ही वो command छीन रहे हो, अगर आप directors को ही cast नहीं करने दे रहे हो, तो फिर what is the whole point of making anything? Because director is going to actually design the entire world for you. So that means that you do not trust the director to make a good show or a film on OTT. यहाँ पर कितने एक्टर्स बनना चाहते हैं? Just raise your hand. अरे बड़े कम हैं. Good job, guys. चलो quickly tell us that what's this one advice you'd like to give them, Nushrratt? I honestly would say concentrate on your own craft, yeah. Actually, I want to point out one more thing which very lately, I mean, I don't know if it's relevant to this discussion, but it can really be beneficial for y'all. Social media की दुनिया में ना एक accepted good behavior है कि अब कैमरा ऑन है तो मुझे ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं बैठने आ रही हूँ तो अभिषेक ने मेरी चेयर मेरे लिए खींची, या मुझे खांसी आ रही तो मुझे पानी दे रहा है, ये रिकॉर्ड हो गया, तो कल सारे लौंडे यही करेंगे कि ये एक्सेप्टेड गुड बिहेवियर है. बिकॉज अभिषेक की वो 2 वीडियो वायरल हो गई कि व्हाट अ गुड बिहेवियर, व्हाट अ जेंटलमैन. व्हाट्स हैपनिंग इज व्हेन पीपल आर मीटिंग पीपल पब्लिकली ना, दे आर ऑल बिहेविंग द सेम. दे डोंट हैव एनी डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी. And I feel as an actor, what your personality has to come out in your work. So don't forget who you are. Be true to who you are and what you're doing. आपको अगर शख्स बोलना है तो बोलो यार. बिल्कुल बोलो यार, बिल्कुल बोलो. Why not? अगर आपको
नहीं सूझा मुझे यार, मैं चेयर खींचूं किसी के लिए डज नॉट मीन आई एम नॉट अ जेंटलमैन और अ जेंटल वुमन और अ बैड पर्सन. उस वक्त नहीं सूझा. इट्स फाइन. वो जो एक्सेप्टेड गुड बिहेवियर है ना, उसको थोड़ा साइड पे रख के अपने आप और अपने इंसान जो आप हो ना उसको रखो. दैट विल मेक यू अ वेरी गुड एक्टर. वेरी गुड एक्टर. एंड यू विल बी डिस्टिंक्टिव. थैंक यू. Abhishek, do you want to just add this from a actor and a casting director, by the way, guys? Right profile, left profile, dikhao mata abhi. But I think what's she's the right. I advice think she's that- right. Like, don't imagine your life that it's getting filmed. I think that's when it happens. अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी को कोई फिल्म कर रहा है तो आप फिल्मों की तरह मतलब हर चीजें करने लगोगे. Don't think of that. And otherwise, I always tell all actors that read as much as possible, travel as much as possible. Try to not stay in Bombay only. अगर आप सिर्फ बॉम्बे में रहोगे तो आपको देश के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा. फिर कल को कोई आपको बोलेगा मध्य प्रदेश का कोई कैरेक्टर बोलना है, आप बोलोगे मध्य प्रदेश कहाँ है ना, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज आपको जो है, और फिर आप बोलोगे लेकिन मैंने यार 5 साल की ट्रेनिंग की है थिएटर में. कहाँ की है? बॉम्बे में. ठीक है, और आपने प्लेस किए हैं किसी मतलब यूपी के किसी राइटर का जिसका आप नाम नहीं जानते हो. So I think it's very important to be aware of the society you're living in. That is very important. And if you're not living your life, because life is going to teach you, life is going to basically reflect in the characters you're performing. So if you guys don't have a normal life, trust me, it will be very difficult to make your characters normal. So okay, so I think just live your life and have fun with it. I think that will reflect on your performances. Abhi, I'm so glad I'm on this panel with you. I can't tell you. Yeah. Because I've given exactly this advice to a very close friend of mine. Can you stop stressing? Take a holiday. Go live life. Let life happen to you. Only then will you be able to give life to your characters. वरना कैसे दोगे? हाँ, हंसो, रो, मुस्कुराओ, क्या पता कल होगा, ना हो. कल होगा, कल डेफिनेटली होगा. लेकिन उससे पहले आज का ये जो माहौल है, इसे विल जस्ट ओपन फॉर मोर डिस्कशंस विद आवर ऑडियंस. यू गाइज हैव, माय गॉड, पहले क्या मैं सवाल क्या पूछ रही थी? डू यू गाइज हैव एनी पेन पेपर? ये मैं पूछ रही थी. हाउ डू यू नो आई एम आस्किंग क्वेश्चन? ओके, डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, प्लीज, द लेडी इन द व्हाइट. यस, Coming. The denim shirt मैं with the उधर specs and आऊंगी, orange मैं band. उस Coming. साइड तक खड़े मत हो जाओ, डोंट वरी. One more. हाँ, तुमको भी I है. have orange bands. Go इधर ahead. एक Go ahead. लाइन बनाना पड़ेगा अभी. यस मैम. हाय सर. Hi. Hi. सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको अभिषेक सर बोलूँ, जना भाई बोलूँ कि शाहरुख बोलूँ. आई एम लिटरली वेरी मच कंफ्यूज. आप यार जो आपके मन में है आप बोल दीजिए. मैं सर बोलूँगी फिर. अरे नहीं, सर मत बोलिए, बस सर मत बोलिए. अब नाउ इट्स अभी बोलिए. इंस्टाग्राम पे फिर लोग And फॉलो भी करेंगे. shit. अच्छा, यहाँ भी सोशल मीडिया Fully हैंडल guilty. यार अभी यार एक्टर निकल गए ये बराबर. सर, तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप दोनों के लिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिंग एंड रियलिटी? It's not separate for me, I think. For me, if someone asks me, आप इस कैरेक्टर को अलग कैसे करोगे, तो मैं बोलूँगी अलग क्यों करना है? रियल करना है. रियल doesn't necessarily mean अलग. Real means आम, normal. Normalize the person you're going to be. Because the more you normalize that person, the more normal people and a larger section of people will relate to it. So for me, it's inseparable. Acting and reality is inseparable, and that's what I'm trying to achieve, which is the toughest job. आप फेक नहीं कह सकते हो. एक्टिंग जो होती है वो तो आप कर सकते हो, बट उसको रियल कैसे करना है, एक्चुअल एम वो है, वहाँ पहुँचना है. सर आप मतलब एक्टिंग और रियलिटी ऑन स्क्रीन की बात कर रहे हो या लाइफ? हाँ. ये एक बार ना, ये एक मैं हमेशा रियल ये सब बातें दिमाग में, और आजकल है भी, मतलब मुझे लगता है कि कैजुअल थ्रो ऑफ डायलॉग्स को लोग रियल एक्टिंग मानते हैं. ठीक है, अगर आपने ऐसे नॉर्मल तरीके से बात कर ली तो लगेगा कि हाँ यार तो बड़ी रियल एक्टिंग कर रहा है, लेकिन समटाइम्स इट हैज़ अ डेंजर ऑफ बीइंग वेरी फ्लैट एंड बोरिंग. सो आई थिंक स्टैनली क्यूब्रिक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि हम लोग जब फिल्मों को शूट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम रियलिटी को सिनेमा के लेंस से शूट कर रहे हैं. So of course it is real, but we should know that it is cinema. It is for entertainment purpose. It is for creating drama. Impact, you mean? And if we are not doing that, then it's basically falling flat. So you have to be smart enough to know, how do I show the same reality with a little bit of drama, so that I can have an extra effect, an extra impact, for the audience. So मैं तो उसमें believe करता हूँ. I love doing hardcore realism. I mean, realism is a very different topic altogether. थिएटर में भी realism, थिएटर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सिखाया गया है, पढ़ाया गया है. लेकिन मैं वो चूज़ करता हूँ मीडियम पे. If I am doing a film like Stolen,
okay, which is an indie film, which is catered to a different audience, then I will choose a different gear for realism. But if I know if I'm doing a commercial film like Stree, then my realism will change. Then the lens will change. So I have to always, वो समझना पड़ेगा कि हर जगह जाके मतलब ऐसे ही एकदम ही रियल दिखाना तो लोग यार डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे यार, फायदा क्या है फिर फिल्म में आने का. So just keep that in mind. That's a great question. Thank you so much. Thank you. I have Really. a small request. Yes. Can I have your autograph? Oh, Please, so sweet. please, Yes, please. please. 3 बार बोला प्लीज तो अब करना ही पड़ेगा यार, डेफिनेटली. हाँ, आप दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं. उन्होंने 2 हाथ ऊपर किए हैं. आप अच्छा ठीक है, आपने भी 2 हाथ ऊपर किए. ठीक है, 1 मिनट. Abhishek sir, my name is Udit Sehgal, and I am a learning actor. Sir, मैंने आपकी एक मूवी देखी अभी वेदा. सर, आपकी परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड, वाओ. Thanks. बट सर, उसके बाद मैंने देखी स्त्री 6 दिन पहले. जी. सर, माइंड ब्लोइंग सर. Thank you, sir. सर, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, बट जेन्युइनली आई वांट टू से यू आर सो गुड, ओ गॉड. Thank you, yaar. Thank you, yaar. Thank you Sir, so much thank for you. I am that. flat. Thank you Wow. so much, yaar. That's very very sweet. Thank you so much. Yes sir. हेलो. सो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है. एक्चुअली मैं 2-3 दिन पहले ना अपने डेस्क पे बैठा था और वहाँ पे पेंटिंग करने की सोच रहा था. और मैंने सोचा कि कुछ पेंट करता हूँ, और मैंने क्राफ्ट के अलावा और कुछ पेंट ही नहीं कर पाया. मतलब मैंने सोचा 2-3 पेंटिंग बनाई, और मैंने हर इसमें देखा कि मैं कैमरा, एक्टिंग, म्यूज़िक, डांस, राइटिंग, इसके अलावा कुछ और पेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ. फिर मैंने सोचा कि तूने हो राइटिंग को कैसे पेंट किया भाई? क्या राइटिंग को पेंट कैसे किया तूने? किताबें और वो सब इस टाइप के. सो मैंने जब अपने दोस्त से पूछा कि यार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सो उसने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक कलाकार के लिए लाइफ ही वो होती है, तो फिर वो तो वो पेंट कर सकता है. उसने स्टार्टिंग में मेरे को सबसे पहले बोला था कि एक पेपर पे अपनी लाइफ बना. सो इसलिए वजह से इसके अलावा कुछ मैं बना ही नहीं पा रहा था. सो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत बुरा भी लगा कि यार एज एन एक्टर इसके अलावा मेरी लाइफ नहीं दिख रही है. ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? दोस्त ने नहीं. अरे यार बना ले तो फिर उसकी तस्वीर बनाना यार. हाँ. Then you can say that this is my life. हाँ वही. I love this question is a googly one what is second. the आप एक्टर बनना चाह रहे हो या आप पेंटर हो, मतलब या नहीं, दोनों हो? मैं हूँ एक्टर, लेकिन मुझे ये आर्ट फॉर्म बहुत पसंद है. सो घर पे बैठे बैठे अगर कुछ नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ. हाँ तो प्लीज करो, बिकॉज मैं तो एक लाइन भी सीधी नहीं ड्रॉ कर सकती, which is a talent. I love that the 2 guys जिन्होंने सबसे excitedly हाथ ऊपर किया. क्या सवाल पूछे हैं आपने? बहुत बट यही हम बात कर रहे थे दोस्त, हम यही बात कर रहे थे कि जिंदगी होना बहुत जरूरी है, गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है, वरना वो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? पेंटिंग को गुड जॉब, बहुत बढ़िया है, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हमने तो नहीं देखनी. So thank you so much. इस पैनल से 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चली है, एंड आई थिंक एक ऑफ कोर्स कि या गर्लफ्रेंड बना लो ताकि उनकी पेंटिंग कर सके. हाँ और क्या यार. And the second very important thing is that how while we speak about actors who are becoming superstars in OTT, एक चीज़ जो आज मुझे realize हुई है, and all of you will agree that the real superstar is the content, and 100%. उससे बड़ा कुछ नहीं है, because that is what is making everything and being a game changer. Guys, thank you so much. This was a lot of fun. Thank you. You were having fun with the questions. अच्छा, one last question यार. हाँ One- एक लास्ट क्वेश्चन. एक मिनट, किसका सबसे एक्साइटमेंट दिख रहा है? ऑरेंज में ओके, क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन नहीं पूछना, और 1 लाइन आप में एक काम करो, बाजू वाले का क्वेश्चन भी पूछ लो, तो दोनों के जवाब मिल जाएंगे ना. I wanted to ask Abhishek sir, so that my question is, when you did theatre, what are your top 3 most favorite theatre acts that you like? मतलब लोगों के या मेरे खुद के? आप, you can say yours. एक an accidental death of an anarchist बोल के एक नाटक है डारियो फो का, तो मैंने उसका हिंदी अडेप्टेशन देखा था. वो आई थिंक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था. मैंने कभी उतना मज़ा कभी देखा ही नहीं, मतलब स्टेज पे. दैट वाज माय फर्स्ट प्ले आल्सो, सो दैट मेड मी अंडरस्टैंड अच्छा व्हाट इज थिएटर, और थिएटर पे एक्टिंग करते कैसे. इट्स वेरी डिफरेंट. इस माइक वाइक तो होते नहीं है,
है ना, आपको मतलब सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, बैक नहीं दिखानी पड़ती, एनर्जी होती है, 1.5 घंटे के नाटक में यू कांट फंबल, इवन इफ यू फंबल यू हैव टू इम्प्रोवाइज. सो आई थिंक रियली दैट रियली चेंज माई लाइफ. आई अंडरस्टूड दैट ओके दिस इज अ मीडियम आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ. हवालात बोल के एक नाटक था जो मैंने खुद प्ले किया था. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अगर आप लोगों ने किसी ने भी उनका कुछ पढ़ा है, सो आई थिंक दैट्स अ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन DU, डनी यूनिवर्सिटी में. अभी भी अगर आप जाओ और किसी से पूछो हवालात के बारे में तो आई थिंक लोग जानते हैं. उसमें दिवेंदु शर्मा भी थे, हमारे मुन्ना भैया, तो वो मेरे सीनियर थे. तो हिम, मी, शुभम, शुभम इज अ राइटर ऑफ ई बालेऊ, इफ यू गाइस हैव सीन दैट फिल्म. देन तुषार पांडे था उसमें, मम्मी बनता था वो छिछोरे में, और विक्रम कोचर जो इसमें अभी डंकी डंकी में जो शाहरुख भाई के जो दोस्त बने थे. So all of us actually are doing good in the film industry. So that is one play. And एक नाटक था जो हमने, एक नुक्कड़ नाटक था, वो था एजुकेशन सिस्टम पे. तो वो मैं जा के क्या कहते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे परफॉर्म किया था. दैट ऑल्सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट थिएटर. आई मीन एंड दैट रियली आई थिंक दैट्स वन मीडियम आई रियली लव. उसमें क्योंकि आपके ना मतलब जैसे कहते हैं जितने भी इनिबिशंस हैं, जो भी शर्म, जो भी जितने भी आपको डर लगता है लोगों से, पब्लिक से, किसी के सामने कैसे बिहेव करना, वो तो ना एक्टर्स को बड़ा टाइट रहते हैं. तो नुक्कड़ नाटक जो है ना आपको वो खोल देता है. तो बस ये तीन वो जो नुक्कड़ नाटक था वो किसी राइटर का नहीं था, वो हम लोग खुद ही थिएटर ग्रुप जो है हम लोग टॉपिक डिसाइड करते थे. जैसे एजुकेशन सिस्टम था वो, तो फिर उसको फिर हम लोग एक अपने हिसाब से ही डायलॉग्स इम्प्रोवाइजेशन करते 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 वी टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर. आधे घंटे का परफॉर्मेंस होता था. दैट दीज 3 आई थिंक आर माय टॉप प्लेज. वैसे मेरे भी 2 ऑप्शन है, इवन तो सवाल मेरे लिए नहीं था और मैं जवाब दूंगी. देयर वाज दिस प्ले कॉल्ड मरीज आई हैड सीन. मेरे ही दोस्त थे धर्मेंद्र, हु वाज प्लेइंग वन ऑफ द पार्ट्स इन दिस. रमजी नहीं, यंगर धर्मेंद्र. मैंने वो प्ले देखा एंड आई वाज अ चाइल्ड व्हेन आई सॉ इट, एंड मेरी फट ली. मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो पाएगा. आई हैव गॉटन सो स्कैर्ड ऑफ थिएटर आफ्टर दैट, आई कैन नॉट टेल यू. एंड देन आई वेंट इन बॉम्बे, आई सॉ इट इन पृथ्वी, एंड देन आई वेंट एंड सॉ वजाइना मोनोलॉग्स. वो देख के मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा ये तो नहीं करूँगी, ये मेरे से अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है. इवन दो आई हैव डन कमर्शियल प्लेज. ब्रिलियंट प्ले दैट इज. What a play, man, and those women, and to see them do that, I was like, ये दो मेरे plays हैं, just saying. Hi, मेरा नाम प्रेरणा. We've got Abhishek Banerjee. Can we please clap for the man, the casting king of the house and the acting ruler too. Thank you. Can we also please clap for Nushrratt Bharuccha? Nushrratt Bharuccha in the house, guys. प्यारी भी है और तीखी सी भी है और अमेजिंग से भी है. Urmin for bringing so many fun and very very intelligent yet enlightening answers to people and their personalities that we want to know more about. So Urmin के लिए तालियां guys. Thank you very much. Thank you so much, Prerna. So मेरा नाम प्रेरणा है और जो आपने कह दिया already, just in case you want me to reiterate it. और आपसे बस कुछ fun सवाल Okay, then. जवाब दें और नहीं मन है तब भी दें. It's जी. just great like that. जी. This one's for you, Abhishek. मैं आपको ना कुछ चीजें देने वाली हूँ, आपको मुझे बताना है मोर या लेस. आपको ज्यादा पसंद है ये Okay. या कम पसंद है? Okay. ठीक है, ठीक है गाइस. रेडी That is- रेडी रेडी. वेरी गुड. कोई फोन में अपने नहीं? गुड. कोई लैपटॉप पे काम कर? वेरी नाइस. गुड गुड. फ्राइडे कोई बात नहीं, कल छुट्टी है. ठीक है, ओके. आज फ्राइडे. अच्छा. अच्छा ये एक्टर लोगों को पता नहीं होता, ये हम कॉर्पोरेट स्लेव्स को हाँ, पता क्योंकि होता. हमारे लिए हर दिन मंडे होता है और कोई भी दिन संडे हो सकता है. फ्राइडे cute. तो पता होगा ना, आप That's एक्टर्स हो. cute. फ्राइडे नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता यार, फ्राइडे था आज. ओके. ओके, सो शब्द आपके पास में बाइक चलाना पसंद है या पिलियन बैठना पसंद है? जी. मुझे पिलियन बैठना पसंद है. Yeah. No, seriously, I actually enjoy that. Yeah. I don't love riding Riding bikes it. यार. पता नहीं, मुझे पीछे बिठा के तुम जो भी कर लो, कितना भी स्पीड में घुमाओ, मैं घूम जाऊँ. मेरा दोस्त था फिर दानिश. चाहे सर काटे या नहीं. अरे oh shit, I just realized that. Yeah, so it goes, life जो है वो उसमें कैरेक्टर दिखता है यार, वही बोल रहा हूँ ना. तो जब रियल लाइफ में आप पिलियन बनते हैं तभी बातें होती हैं या फिर हाँ, हो मुझे जाती है बड़ा हवे मजा में? आता है. मुझे ऐसे मतलब कोई ऐसे घुमा ले मुझे. सही. I enjoy that. Anybody you can. ब्यूटीफुल.
I hoped it was a girl, but okay. तेरे साथ चल लूँगा यार. Chocolate. More or less? What do you? नहीं, आपके लिए. अच्छा, I already ate two. I love it. Love it. Love it. Sunrise. Less. Beach. Huh? Beach. Less. पैसा. More. Validation. Huh? Validation. More. Vanity. Banerjee. Vanity. Vanity. Less. कह रहे हैं Banerjee. More. Vanity. Less. These days it's becoming more. I don't know. Okay. It's becoming more because Okay. of the peer pressure. Okay. Last one. मोतीचूर के लड्डू. Less. Less. चलो ठीक है. Okay. Good one. Can we please get a hamper for Abhishek Banerjee and his answers? एक hamper ले आओ. Nushrratt, Amante has always, sort of worked towards as a brand, towards making sure that lingerie is considered to be something that's basic and casual, and Abhishek, of course, finds humor in everything. No, I'm sorry, but outside we were getting hampers. So he said, "यार ये दूसरा brand." I'm like, lingerie का है. Please छोड़ दे. उसका hamper मत ले. I think Abhishek, next time अगर मेरे हाथ में तो मैं अभिषेक को भी अमांते के hampers देना चाहूँगी. Why? क्यों वंचित रखे हम किसी को? But Nushrratt, this सवाल is for you. How Yeah, I has can gift somebody. He has a life. मैं आपको पिलियन बिठा भी रही हूँ, आप मुझे गिफ्ट भी कर रहे हैं. It's amazing. Like you made my day. Nushrratt, how has your relationship with lingerie changed over the years? What would you like to tell to yourself, to this audience here? Anything that you would like to share? Oh, massively. Yes. Massively. I love lingerie. I'm sorry. You guys can hashtag that. I don't care. You don't have to be sorry. First of all, I don't Yeah. want this word to exist where lingerie exists. So, Listen, yeah. I walk into, I won't name the brands now because there's a brand at the back, but I walk into lingerie shops and I shop for myself. Right. The sexier, the better. Yeah. The more colorful, the better. Yeah. And the more well fitted, the better. Yeah. And I wear it for me, guys. I wear it inside what I'm wearing, so nobody else can see it. Yeah. Just like my tattoos, they are where they are. No one else can see them. Only I can. अरे curiosity से दिमाग खराब हो रहा है. Nushrratt, but what an answer. Thank you very much. Nushrratt के इस बहुत ही delightful जवाब के लिए, बहुत ही honest जवाब के लिए, can we please have a Amante का hamper for Nushrratt? Thank you guys. Oh. Yes. Great stuff. Well done. अब एक फाइनल स्वीट सा मैं सवाल पूछना चाहूँगी आप दोनों से. अगर आपके जीवन में आप कुछ फिटिंग करना चाहते हैं, बड़ी लग्जरी सी जो हमारी फिटिंग है फीमा की, लग्जरी फिटिंग्स, ये आपको लग रहा होगा लाइट है, पर लाइट है नहीं. ये इसका है मैजिक, जादू. ये है शावर. ये भी मिलेगा क्या? हाँ. You are going to be amazed today. So इसमें से आपको जो कुछ भी पसंद है, आप मुझे बताएं और फिर हम फीमा से कह के या आपके घर में लगवा देंगे. अरे यहाँ बैठे हैं आप, कैसे विश्वास नहीं कर पा रही हैं? सुनो, मैं डबल सीरियस हूँ बिकॉज मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ. आई नीड फिटिंग्स. एक से नहीं होगा, 4 बाथरूम है. देखिए ये गोल्ड शावर हेड है अभिषेक. आप रियल लाइफ में ज्यादा लंबे हैं वैसे, तो ये शावर हेड यहाँ नहीं, यहाँ होगा आपके लिए. ठीक है. और ये गोल्ड का बेसिन मिक्सर है. ठीक है. मिक्सर नहीं है, मतलब पता चला यहाँ पे वाटरमेलन जूस बनाया जा रहा है. ऑफ कोर्स दिस इज अ ग्लास नॉब. ये भी शावर हेड है, ये भी शावर हेड है. Correct, and this is like one straight thing. I'm educating him, guys. You're Yeah, totally which one? You need to choose in like the next 10 seconds. What do you think? I actually like the shower things. Yeah? Yeah, I'm a shower person. So one shower head for Nushrratt. Which one? But Nushrratt ji, आपको थोड़ा you'll have to be decisive about दोनों this. नहीं मिल सकते. नहीं, अच्छा, एक sorry. चाहिए. दोनों सेम है, सिर्फ नहीं, अंदर के वो आपको jets बताया भी था अलग हैं. स्कूल में लालच बुरी बला ऐसे. आपने तो अभी more or less खेला, more ना. More or less दूसरा client था. Abhishek, it's not really working. Please don't keep switching the Abhishek's like a kid in a candy store. तो हम wet wipes दे देंगे आपको. देखो ये जो है ना, ये मैं एक खास बात बताती हूँ. ये जो है ना, ये एक्चुअल में लाइट के लिए नहीं है, ये शावर के लिए. ये शावर चालू है, शावर हो गया. Shower, I'm telling you. Guys, can we please clap for 2 shower heads from Fima, for Nushrratt, for Abhishek. Can we have some plaques that Urmin can share for
Abhishek and Nushrratt. And can we please clap for this fantastic bunch? For yourselves and for them. क्योंकि अच्छे सवाल, अच्छे जवाब, अच्छी दोपहर. Guys, please keep clapping for awkward moment. Thank you. Thank you so much, Abhishek. Thank you, Nushrratt. We had a great time, and thank you for always saying yes to Bollywood Hungama. It really, really means a lot. Ye I'm so glad you all remember that. Because I've always said yes, actually. Yeah, I think this is my second year, I think, in Bollywood Hungama. It's Many, always many fun. more, Yeah. Ruku. And you're such a good host. Thank you for doing such a great job. Thank you so much, Abhishek. And you guys are lovely, all of you. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you so much.